Good morning, children. Today we will do the exercise part of the lesson Pinocchio. Yesterday I told you the story of Pinocchio. Now I am doing exercises for you. Now children, there is a corner, fun corner. Reading is fun, and some questions are given there, and I will tell you the answer. What did the carpenter buy? He bought a very queer piece of wood. The carpenter bought a very queer piece of wood. Now what did he make out of it? He made puppet out of it. What did he call his puppet? He called his puppet Pinocchio. What did Pinocchio say in the end? In the end of the story, the Pinocchio said that I am glad to be a real boy. I will never lie again. Now children, let's talk. Have you ever seen a puppet? Yes, we have seen a puppet show. Yes. Tell the story of Pinocchio with actions. Children, you have to tell the story of Pinocchio in your actions. You can do it at your home. Now word building. Children, word fun is there. How many words can you make from Pinocchio? Fill them in the empty boxes. Children, look at this exercise. Yes. So Pinocchio word is given there, and you have to tell so many other meanings from this word, like out of Pinocchio. Yes, pin, hop, chin, on, in, o, no, knock, chick, pick. These are some words which are extracted from the spelling Pinocchio. Now some other thing. Yes, children, you have to, let's write. You have to make the opposites from the words, and make opposite with the words prefixing this or in, or whatever you want. Respect, disrespect, able, unable, efficient, inefficient, own, disown, capable, incapable, and secure, insecure. So now second exercise is make naming words by adding ness, ity, ty at the end. Yes, of the words given below. Some words are given below, children, and you have to add their appropriately ness, ty or ty at the end. Yes. Now these are like this. Yes, publicity, forgive, forgiveness, kind, unkind, polite, impolite, moral, morality, blind, blindly, cruel, cruelty, swift, swiftly, solid, solidity, solidness. You can kindness, you can say kindness also, polite, politeness, moral, morality. Now children, in exercise third, which of the following would you expect a carpenter to use at work? Children, there are some instruments which a carpenter uses while he make wooden things. So some words are given there. You have to choose the words, choose the things only which the carpenter use. So there are so many words. I will read all the words, but after that I will read the words only those things which carpenter use in making wooden things. Now bench, poker, plane, chisel, fork, spade, blotting paper, lawn mower, telescope, pincers, jaws, scissors, hammer, map, nails, and lathi, pencil, anvil. So children, what are the things carpenter uses in his work? He uses poker, plane, chisel, pincers, jaw, hammer, nails, pencils. Other things are used by other persons, other helpers. Now make sentences using some of the above words. Children, I have from the group of the words, I have chosen some words and made sentences for you, like bench, we sit on the bench, fork, we eat with the fork, spade, we plow with the spade, plow field with the spade, blotting paper, we soak in from night, and telescope is used to see heavenly bodies. Then scissors we cut clothes with it, and hammers we fix nails with hammer, and pencil, carpenter marks with pencil.
Now children, give another word from the story. That means some words are given here and you have to choose another word from the story. Now completed, finished, surprised, amazed, strange, unfamiliar or wonderful. Make up your mind, determined. Now children, add er or r in the doing words below to make. Children, there are word is given there, doing words which is called, and you have to suffix er or r at the end of the word and make some words like stiff, stiffer, fight, fighter, juggle, juggler, speak, speaker, write, writer, strange, stranger, dance, dancer, ride, rider, use, user, joke, joker. Children, in some words er is fixed in the after the word main word, and in some words only r is given there, r is fixed there. Like you can say stiffer, stiffer we have used er. Now fight we used er, juggle we used only r, and speak we used er, writer, write we used r only, strange we used r only, dance we used r only, ride we used r only, and use we used r only, and joke we used r only. There is a story, very short story children, for the comprehension. This is a comprehension passage. A story is taken here. You have to listen the story and you have to give the answer. Once a cunning jackal jumped into a big tub of blue dye. बच्चों, एक बार की बात है कि एक बहुत ही चालाक सियार था, वो एक नील के टब में, जिसमें कि नील घुला हुआ था, उस टब में कूद गया. आई एम योर किंग ही सेड, उसने कहा, और वो बाहर निकला तो वो नीले रंग का हो गया था. उसने कहा ही सेड ऑल द एनिमल्स, उसने सारे जानवरों को बुलाया और कहा, बिग एंड स्मॉल, कितने छोटे बड़े जानवर थे सबको बुलाया और कहा, बिलीव्ड हिम एंड बाउड हिम बिफोर. उसने कहा मैं तुम लोगों का राजा हूँ. और मैं सभी जानवरों ने क्या किया कि वो कुछ अजीब सा दिख रहा था तो जानवरों ने उसको अपने राजा से स्वीकार कर लिया और सब उसके आगे जो है झुकने लगे, उसको सलाम करने लगे, उसको विश करने लगे. द क्लेवर जैकॉल स्माइल्ड, और वो जो बच्चों चालाक सियार था वो बहुत मुस्कुराने लगा. नाउ ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट. चूँकि बच्चों वो बहुत अजीब सा दिख रहा था और नीले रंग का दिख रहा था तो वो जंगल का सबसे पावरफुल जानवर माना जाने लगा. ही वॉज प्राउड टू बी अ किंग, वो बहुत अपने को घमंड करता था, गर्व करता था कि मैं एक राजा हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ. वंस द जैकॉल वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, एक बार की बात है बच्चों कि वो सियार जो था आधी रात में जग गया. द जैकॉल्स इन द फॉरेस्ट वर हाउलिंग एट द फुल मून इन द स्काई. बच्चों, आपको पता होगा कि जैसे डॉग्स हैं या जैकॉल्स हैं, ये लोग पूर्णिमा के दिन फुल मून के समय ये लोग आकाश की तरफ मुँह करके बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं, हाउलिंग करते हैं. इसको हिंदी में हुआ हुआ बोलते हैं, वैसे वो आवाज़ करते हैं. द ब्लू जैकॉल फॉरगेट ही वॉज अ किंग. और बच्चों, जैसे सारे जानवरों ने क्या किया कि वो आकाश की तरफ मुँह करके हुआ हुआ ज़ोर ज़ोर से करने लगे. ये जो सियार था, नीला सियार था, ये भी भूल गया कि वो राजा बन गया है और वो भी वैसा ही हुआ हुआ करने लगा. ही टू बिगैन टू हाउल, उसने भी हाउलिंग शुरू कर दी और हुआ हुआ करने लगा. हुआ ही क्राइड, वो चिल्लाने लगा. द एनिमल्स रैन आउट टू सी, सारे जानवर दौड़ कर आए और देखने लगे. ही इज़ नॉट अ किंग, अरे ये तो राजा नहीं है. ही इज़ जस्ट अ जैकॉल, ये तो सिर्फ एक गीदड़ है, ये सियार है. दे शाउटेड, वो चिल्लाए. दे रश टू अटैक हिम, और उन सभी ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया. और स्टॉप आई एम सॉरी, तब वो नीले सियार ने कहा, अरे रुको, मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ. आई ट्रिक्ड यू, मैंने आप लोगों को धोखा दिया, आप लोगों को मैंने आप लोगों के साथ मैंने धोखा किया. प्लीज़ डू नॉट किल मी, लेकिन मुझको प्लीज़ मत मारो. सेड द ब्लू जैकॉल, इस नीले सियार ने कहा. द एनिमल्स फॉरगेव हिम, जानवरों ने उसको माफ़ कर दिया. बट ओनली आफ्टर गिविंग द जैकॉल अ गुड बीटिंग, लेकिन पहले बच्चों उन सारे सियारों ने मिलकर उसकी पिटाई की और उस पिटाई करने के बाद में फिर उन लोगों ने उसको माफ़ कर दिया. A Panchatantra tale. Children, this story is taken from Panchatantra tale. पंचतंत्र नामक जो कहानी का संग्रह है उससे ये कहानी ली गई है. Reading is fun. Now children, there are some questions and you have to give the answer about this paragraph, this passage. Why did the animals think that the jackal was the king? वो सभी जानवर क्यों सोचने लगे कि वो जो गीदड़ था वो राजा था? Because he was dyed with blue color. उसने अपने आप को नीले रंग से रंग लिया था.
हाउ डिड द जैकल बिकेम ब्लू, वो जैकाल, वो जो सियार था वो नीला कैसे हो गया? ही जम्प्ड इनटू अ बिग टब ऑफ ब्लू डाई, क्योंकि बच्चों वो नीले रंग के कलर में वो कूद गया और वो नीला हो गया। वाई डिड द एनिमल्स डू व्हेन दे सॉ द ब्लू जैकल, बच्चों जब उन सारे जानवरों ने देखा कि नीले रंग का सियार है, सारे जानवरों ने क्या किया? दे कंसिडर्ड हिम जस्ट लाइक देयर किंग एंड दे bowed in front of him. They given respect him. So what did the animals do when he saw the blue jackal? Yes. Why did the dogs feel scared when they saw the jackal? They also scared when they saw the jackal, but because it was looking very strange. How did the animals know that the king was just a jackal? बच्चों जानवरों को कैसे पता लगा कि वो जैकल जो था वो सियार है, वो कोई राजा नहीं है? Because when he began to howling, they all knew that the king was just a jackal. बच्चों जब सभी सियारों के साथ वो हाउलिंग करने लगा, हुआ करने लगा, तो सब जानवर समझ गए कि ये जो है ये सियार है। Now some rhyming words are given, children. You have to recite those words: laugh, cuff and rough, fish, dish, wish, fan, van, ran, few, view, due. Children, now let's make a puppet. Craft work is given for you. You first understand how you will make this craft. This is a puppet. You look at your book. Now how you will make this puppet, I will reading here. What are the things you need? You need a brown envelope, newspaper, stick, glue, paper, colors, sketch pens. Now methods, how will you make this puppet? First, number 1 is make the face of a monkey on a white paper and color it. Second is cut out the face and stick it on a brown envelope. Then crush the newspaper and fill it in the brown envelope. Now put the stick inside the envelope and close the mouth of the envelope firmly with a tape of ribbon. Now your puppet is ready. Children, have a look again. Children, you can make this puppet in your home. This is your project work. Now thank you.